So friends, let's now discuss route type 1, yeah, Ethernet auto discovery route. So friends, the first question that we might have is why do we need an Ethernet auto discovery route when we have the Ethernet segment route or route type 4? तो इसे अगर हम अपने टोपोलॉजी के थ्रू समझने की कोशिश करें तो जैसा कि हमने रूट टाइप 4 के केस में देखा कि रूट टाइप 4 is used by provider edge devices या leaf switches to discover each other. तो इस केस में हमने ये देखा था कि जैसे हम ये सारे वैल्यू कॉन्फ़िगर करते हैं on the port channel attached towards the endpoint या server 1 VLAN 10 हमारे केस में, तो जो leaf 1 है या provider edge device है, it sends the Ethernet segment route या route type 4 towards the spine, and the spines sends those updates towards the other leaves, or based on the ESI value there is an import route target that gets generated, and based on that import route target जो provider edge devices होते हैं they discover other provider edge devices that are connected towards the same Ethernet segment, जैसे कि हमने route type 4 के केस में देखा. So now the question is, जो remote provider edge device है, which in our case is leaf 3, how does this provider edge device know to reach server 1 VLAN 10 हमारे केस में, how to reach that end device? I can either use leaf 1 or I can use leaf 2. उसे कैसे पता कि remote endpoint is multi-homed to two or more provider edge device या leaf device? So this is where we use Ethernet auto discovery route या route type 1. So friends, when we configure the Ethernet segment identifier on the port channel towards the Ethernet segment, route type 4 के अलावा the leaf switches or provider edge switches, they will also generate an Ethernet auto discovery route, which is also called route type 1. ये route leaf switches spine को advertise करते हैं, and the spines advertise these routes as BGP update towards the remaining leaf switches. तो जैसे ही हम leaf 1 और leaf 2 पे Ethernet segment identifier configure करेंगे, both leaf 1 and leaf 2 will generate route type 1 या Ethernet auto discovery route, and the spines will send that update towards the remaining leaf switches. So for the Ethernet segment connected towards server 1 VLAN 10, जो value हमने use किया था वो है this value that you see on the screen ending with 0012 on both leaf 1 and leaf 2. तो जैसे ही हम leaf 1 और leaf 2 पे ये Ethernet segment identifier configure करेंगे, both leaf switches will send that as BGP update towards spine 1 and spine 2, or spine switches will send that update to the remaining leaf switches like we have discussed already. तो जैसे ही update leaf 3 के पास आएगी, उसकी BGP table में एक entry create होगी which will say for ESI ending with 0012, I can either use leaf 1 or leaf 2. Now when server 1 VLAN 10 sends any traffic, or let's assume कि ये traffic gets hashed to leaf 1 towards ETH1/3, और जैसे ये traffic leaf 1 के पास आएगी, उसके पास server 1 VLAN 10 के लिए एक ARP entry create हो जाएगी. उसके बाद leaf 1 will send an update towards the spines which will be a route type 2. So जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा कि जैसे ही लीफ स्विचेस के पास एन होस्ट के कोई ट्रैफिक आता है तो वो उस एन होस्ट के लिए एक BGP अपडेट सेंड करता है टुवर्ड्स इट्स अपस्ट्रीम स्पाइन स्विचेस. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पे रूट टाइप 2 के वीडियो चेक करें, जिससे कि आपको रूट टाइप 1 के कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी. लेट्स कंटिन्यू विद रूट टाइप 1. और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ही लीफ 1 के पास सर्वर 1 VLAN 10 की ARP एंट्री क्रिएट होगी, वो इस ARP एंट्री के MAC and IP को एज अ BGP अपडेट सेंड कर देगा टुवर्ड्स इट्स अपस्ट्रीम स्पाइन, बोथ स्पाइन 1 and spine 2, और स्पाइन 1 and 2 इस रूट टाइप 2 को
रिमेनिंग लीफ स्विचेस को सेंड कर देंगे, विच इंक्लूड्स लीफ 3। और जैसे कि हम जानते हैं कि रूट टाइप 2 में हम ESI वैल्यू भी सेंड करते हैं। सो लीफ 3 के पास ये अपडेट आएगी एज ए रूट टाइप 2, और रूट टाइप 2 में हम ESI वैल्यू भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया। तो जो BGP एंट्री क्रिएट होगी लीफ 3 पे वो कुछ इस तरह होगी। सो द मैक एड्रेस ऑफ server 1 VLAN 10 with ESI value 0012 can be reachable via leaf 1, but हम जानते हैं कि with root type 1 हमने ये पहले देखा कि ये ESI value can also be reached via L2. So leaf 3 now knows to reach this MAC address on this ESI, I can either use leaf 1 or leaf 2. Now, leaf 3 can load balance traffic for the MAC address of server 1 VLAN 10 to both leaf 1 and leaf 2. So this is how Ethernet auto discovery route per EVI helps in load balancing traffic between multiple provider edge devices या leaf switches. और इस process को aliasing भी कहते हैं. So aliasing is a feature which provides leaf switches with the capability to load balance layer 2 unicast traffic towards all multi-homed PE devices that have the same Ethernet segment. तो जैसा कि हमने अपने topology में confirm किया, leaf 3 की BGP table में there are two entries for the MAC address of server 1 VLAN 10 with ESI 0012, and that points to leaf 1 and leaf 2. This is exactly how aliasing works. So like we discussed, it's the feature which provides leaf switches, which in our case was leaf 3, the remote leaf switch, with the capability to load balance layer 2 unicast traffic towards all multi-homed PE devices, which in our case was leaf 1 and leaf 2 that have the same Ethernet segment. तो हमने देखा कि leaf 1 और leaf 2 पे same Ethernet segment configured है, और leaf 3 now has the entries in its BGP table to load balance traffic towards both leaf 1 and leaf 2 for server 1 VLAN 10. और root type 1 का दूसरा variation है वो है Ethernet auto discovery route per Ethernet segment, and the way it works is instead of a single server on this segment, we can have a switch which will have multiple devices connected to it, and as a result we can have multiple MAC addresses coming from that switch. तो leaf 1 या provider edge device जब इन MAC addresses को learn करेगा तो वो उन MAC addresses की entry send करेगा towards the spines, and the remaining leaf switches or provider edge switches will learn those host routes via BGP. But अगर ये interface down होता है तो instead of sending multiple BGP withdrawal routes, leaf 1 इस case में एक single withdrawal update send करेगा towards the spine devices, and as a result of which जो बाकी के leaf switches हैं या provider edge switches हैं will remove leaf 1 from all the Ethernet auto discovery routes which has that leaf switch. So इस केस में जो हमने ESI define किया था on leaf 1, उसके लिए भी leaf 1 ने एक Ethernet auto discovery route पर Ethernet segment send किया होगा, और जो leaf 3 है उसके BGP table पे एक entry होगी which says to reach ESI value of 0012 I can either use leaf 1 or leaf 2, but जैसे ये इंटरफेस डाउन होता है तो leaf 1 एक सिंगल मास विड्रॉल अपडेट सेंड करेगा जिससे कि leaf 3 अपने BGP टेबल से leaf 1 को रिमूव कर देगा for all the EVIs, because इस Ethernet segment पे multiple MAC addresses learn होंगे जो multiple VLAN को belong करेंगे, और multiple VLAN can be mapped to multiple VNIs, जिससे कि हम BGP में fast convergence achieve कर सकेंगे. तो like we discussed, Ethernet auto discovery route per Ethernet segment helps in faster convergence using mass withdrawal.
So just to summarize the functions of root type 1, हमने इस वीडियो के थ्रू समझा कि root type 1 provides faster convergence. It also provides mass withdrawal. हमने देखा कि अगर कोई link down होता है which is connected towards an Ethernet segment on a provider edge device, कि कैसे वो provider edge device will send a mass withdrawal route towards the spines instead of sending multiple BGP updates. इससे हम fast convergence achieve करते हैं in a multi-homed VXLAN BGP EVPN environment. और हमने aliasing के थ्रू ये भी चेक किया कि कैसे remote PE devices traffic load balance कर सकते हैं towards all multi-home PE devices that have the same Ethernet segment configured. So friends, this is how Ethernet Auto Discovery Route works in theory. So let's go to our lab and how it works from the CLI perspective. So going back to our topology, so we have two spines, spine 1 and spine 2, connected to 3 leaf switches, leaf 1, leaf 2 and leaf 3, or leaf 1 और leaf 2 के interface ETH1/3 को हमने port channel 12 का part configure किया है और इस port channel पे हमने एक Ethernet segment identifier assign किया है with this value ending with 0012 और जैसे हम ये value assign करेंगे leaf 1 और leaf 2 एक Ethernet auto discovery route send कर देगा towards the spine जिसको हम अभी Wireshark के थ्रू भी कंफर्म करेंगे. तो अगर हम leaf 1 पे इंटरफेस पोर्ट चैनल 12 की कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो इस पे हमने Ethernet सेगमेंट ID 12 कॉन्फ़िगर किया है और जो सिस्टम मैक असाइन की है इट्स द वैल्यू एंडिंग विद 0012 और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम एक 6 बाइट सिस्टम मैक असाइन करते हैं एज द Ethernet segment identifier. But based on the system MAC, the leaf switches will generate a 10-byte Ethernet segment ID. And just to explain the process better, मैंने इस leaf switch पे, i.e. leaf 1 पे, port channel 12 को shut करके no shut किया, which triggered the BGP update from leaf 1 towards spine 1. So let's see that update on a Wireshark capture. So this is the BGP update that was sent from leaf 1 to spine 1. Leaf 1 का जैसे कि हमने पहले वीडियोस में चेक किया leaf 1 का जो loopback 0 IP है which is the channel source interface for VXLAN, it is 3.3.3.3 and spine 1 का जो loopback 0 interface है it has an IP of 1.1.1.1. तो अगर हम इस update को चेक करें, yeah, there you go. This is the Ethernet Auto Discovery route, route type 1, जैसे कि हम देख सकते हैं. It is sent as a BGP update, network layer reachability information, EVPN NLRI, Ethernet Auto Discovery route, route type 1, जैसे कि हम देख सकते हैं. And again, the route type 1 also includes the Ethernet segment identifier, and this will get installed on leaf 3. So let's go to leaf 3 and confirm the BGP table for BGP L2 VPN EVPN. So this is the BGP L2 VPN EVPN summary on leaf 3. अगर हम इसकी BGP L2 VPN EVPN table check करें, and let's filter just for route type 1 just to be very specific. So these are the updates that it has received from leaf 1. So for route distinguisher 3.3.3.3:391, we have the same entry on leaf 3 which is a remote leaf switch, and ये एक route type 1 entry है as we can see which has this Ethernet segment identifier और ये update हमें 2 बार receive होगा. Like we see it has 2 available paths. We see 2 available paths because हमारी topology में we have 2 root reflectors. So ये update दोनों root reflector के through leaf 3 को receive होगा. So that's why we see 2 entries in the BGP table. So yeah, this is how leaf 3 know कि to reach this ESI, I can use leaf 3 and it has the same entry from leaf 4 as well. So
That's how we can achieve load balancing using Ethernet auto discovery route. And in case of any issues with this link, there will be a single withdrawal route that will be sent towards the spines, which will ensure fast convergence. So friends, this is the process of fast convergence and load balancing along with mass withdrawal that we can achieve through Ethernet auto discovery route. So friends, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए with your friends and colleagues, और कोई भी कमेंट हो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में अपडेट कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए ऑन Buy Me a Coffee. The link is in the description. So friends, thank you very much for stopping by today, and I will see you in future videos. Thank you.